Pranam everyone, Hari Om, Namaste, welcome back. Pranam ji. Didi ji, may I say the prayer, please? Yeah, please. Okay. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Yes, so the topic of the text is Atma Bodh. Knowledge of oneself as Atma, one's own Swarup. 19th verse onwards, we are beginning to see a fulcrum-based topic, the quintessence of Vedanta, Shankara Vedanta, Advaita Vedanta, where the inquiry of the individual jiva of the world which we experience and of the unknown factor which we project, have faith, accept, or not have faith, reject, which is Bhagwan, Ishwar, but something that is not in our pratyaksha, in our sense perception, but is purely anubhav based or shraddha based. And it is different in different backgrounds and cultures. There is no standard to it. From our own backgrounds, we accept a Bhagwan, call it with any name, which seems to be the sole support for jivas in struggle, during struggle, and certain jivas whose thinking gets awakened to knowing, determining, ascertaining if that nature
if that Bhagwan is true or not. All our darshanas in Vedic culture that have evolved are only addressing these three questions. जिज्ञासा जब मन में आती है खुद को लेके, जगत को लेके और भगवान को या ईश्वर को लेके, उस जिज्ञासा के वेरियस दार्शिकास, those who have seen, seers, the founders of those darshanas, they have propounded a vision which addresses the three core points of Jignasa. They've propounded it, they've proposed it to people, and each one to their own capacity and inkling gravitate to one or the other. हम लोग अद्वैत वेदांत में हैं, which means over here Shankara and the Parampara, Advaita Parampara. Shankaracharya is a Madhyamacharya. He is the one who's connecting the link from the Adi Guru to our immediate Guru. He is the Madhyama Guru. He is the one who is the chain who made the Advaita Darshan clearly expressed in writing through his bhashyam. It's like dictation. अगर आपके आचार्य कुछ कह रहे हैं इन दोज डेज, आजकल हम लोग नोट्स बनाते हैं साइमल्टेनियसली या ट्रांसक्रिप्ट करते हैं. Now bhashyams are actually dictations. Not that he has written down, somebody's dictated, not in that sense, but these are the thoughts of the parampara that was flowing in time, and he anchored them through bhashyam so that a mumukshu inclined towards knowing the three, जिज्ञासा जिसको इन तीन के बारे में होएगी, उस मुमुक्षु को जब कोई लिविंग गुरु ना भी मिले तो भी भाष्यम itself should become the source light of guidance. Means अद्वैत परंपरा उन्होंने ऐसे गूंथ दी भाष्यम के थ्रू प्रस्थानत्रयी में, that even if someone who is matured in their thinking but hasn't been able to find a similar thinking or somebody who can take them to the next step of their own spiritual growth, तो भी भाष्यम को समझकर वो अपनी गति में रहेंगे और भगवान promises rest of the work पुरुषार्थ के लेवल पे जो उन्हें करना है वो कर पाएंगे. Rest भगवान will give as a prasad. That is Advaita. उसका fulcrum is what I want to say. Fulcrum is Adhyas. Adhyas is, in English, the word is superimposition. The word does have a meaning. It's superimposed. किसी पे किसी चीज का आरोपण करना, imposition करना, superimposition करना. That is one over the other. Exactly, you know, in winters, जब बहुत ठंड हो जाती है, and some of us, those of us who may have a habit of taking 2 blankets, and at night, if you have not superimposed them properly, if you have not superimposed the 2 properly, what does that mean? Their edges should meet at all points. If one of the edges is not, आप जल्दबाजी में एक के ऊपर एक रख दी, तो half night through what happens? One of them falls off. This is not a superimposition. Superimposition means they will remain like that throughout the night, however much you turn, because if they fit properly one over the other, even if you've not still, but if they have been placed properly on one on the other, they image each other as if. That is superimposition. Now, बहुत बड़ी बात है ये. वेदांत में थिंकिंग इसके ऊपर ही रहनी चाहिए.
चलते फिरते, खाते पीते, सोते उठते, whenever we have free time in between, superimposition is one concept that we need to delve deep into, because these are the verses which are now giving us an overview through various, what is the superimposition जो अविद्या में हम कर रहे हैं. थियरी में अगर कहें तो आत्मा पे हम देह, मनो, बुद्धि, इंद्रिय के व्यापार को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. That is superimposition. And remember the blanket example. It's as much as that. Means there is no space between the two कि दो अलग दिखें तुम्हें कभी. That is called superimposition. They will look one. In fact, when you see one, you won't see the other. When you are seeing the snake, you don't see the rope. That is superimposition. Now, this superimposition, he says in the 19th verse, that yatha shashi dhavan drishyate. Just as on a cloudy night, vaguely cloudy, partly cloudy, but the moon is bright and the clouds are moving by the air. Abhreshu dhavatsu. Abhreshu is clouds. Basically, it means jisme gati hai. So the meaning of clouds is an interpreted meaning. Like we said in Sanskrit, we have all words with meanings. So abhreshu means that which has gati. In the context, what has gati? The clouds have gati. They have movement. Clouds are moving because of what? Because of vayu. Vayu samipe. Because the air is breezing, the clouds are breezing. But what does it look like to us? Shashihi dhavatsu iva. It looks as if the moon is moving. धावत्सु मीन्स भाग रहा है. जब क्लाउड्स भाग रहे हैं तो लगता है कि चंद्रमा भाग रहा है, बट चंद्रमा रियली स्पीकिंग नहीं भाग रहा. It is, we all know that Chandrama is stationary. What is the moving part? Is the clouds. They have a nimitta, and that nimitta is the breeze. Vayu uska karan hai. But चंद्रमा का उससे कुछ लेन देन नहीं है. चंद्रमा तो बस अपनी लाइट उस पे भी डाल रहा है, बट नीचे खड़ा इंसान, उसको लगता है it is the moon that is moving. In the same way, this is a drishtant. Drishtant is always for a drashtant. And what is the drashtant? He says, vyaprateshu indriyeshu. And share. You can see the text. Anji. Vyaprateshu, we are on this verse, 19th verse. Vyaprateshu indriyeshu atma vyapari avivekinam. This indriya, what are the indriyas doing? Moving. They are doing their own charana. They are having a gati.
What is the gati the indriyas have? They move towards the respective sense objects. Eyes move towards color and form, ear moves towards sound, etc. These indriyas, senses that have their own movement towards their respective sense objects. What appears is Atma Vyapari Iva. This Atma looks as if it is moving. Just to make sure, you're still seeing Atma board text, no? No? No, you're seeing this Arataite. No, we can't see the text. So you are seeing this screen where you're seeing all of us. Yes. So, Vyaprateshu Indriyeshu. These Indriyas are moving towards their own sense objects. Vyapari iva drishyate. It looks like moving. What? Atma. Atma also seems to be moving along with the senses. What is Atma? इसको पकड़ना है. Aham shabdartha. What is Atma? Aham shabda artha. Aham shabd ka arth is what is Atma. जब इंद्रियां अपने काम कर रही है तब लगता है कि आत्मा भी चल रही है. Why? Because इस अहम का I refer to myself as I am seeing. I am hearing. When I say I am seeing, I am hearing, in this I, aham, इस शब्द का अर्थ मुझे ये तादात्म्य शरीर जीव लग रहा है. No wonder. Is there a lag in my internet? No? Okay, good. Okay, I think this will be better. Can you hear? Great. So, these indriyas are doing their work according to the Prakriti, gunas within oneself. Our own likes and dislikes gravitate us to their respective sense objects. But हमें मन में क्या लगता है? मैं देख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं खा रही हूँ. ये मैं जो अहम है, अहम पद है, आई है, इसका अर्थ आत्मा है. So what has happened? This chalana vyapar of the senses and the mind that is happening, I have imposed it on the Atma. How? Just as when the clouds are moving, I impose movement on the moon. I am seeing. आंख देख रही है. किसको देख रही है? रंग और रूप को देख रही है. ये रंग एंड रूप का ज्ञान मेरे अंतकरण तक आया. ये एक व्यापार हो रहा है. शब्द मेरे कान में आया. ये व्यापार हो रहा है. ये जो व्यापार हो रहा है, मैं इससे भिन्न नहीं दिख रही.
I don't see myself as a separate kutastha nitya. I don't see myself as avikari. When the sense perceptions are happening, they are vikari. एक कलर एंड फॉर्म आया, फिर साउंड आया, फिर स्मेल आई, ये विकार है. दे आर चेंजिंग. All sense perceptions are changing eternally, ever. As long as there's a body, they will change. But what happens when there is in association with who's let me put it this way, who's empowering them? ये इंद्रिय किसके प्रेजेंस में काम कर रही है? कौन चला रहा है इनको? क्या जीव चला रहा है इनको? Am I the one who's operating the eyes to see the color and form? No. I think we should be common on that answer. Anna, I'm not making my eyes, I have in fact no clue how my eyes, how many, what are those beautiful cells in the retina? Fine. So fine they are. Hum to shayad, we don't still have instrument to even count them. Now, somebody is making them or something is making them operative. इंद्रिय चल रही है तो इसको नियंत्रित कर रहा है कोई चला रहा है इसको. अब कौन चला रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं देख रही हूं, मगर मैं इंद्रिय को नहीं चला रही. कौन चला रहा है? Here, up to here is all we understand from our standpoint. Here onwards, Shastra teaches us, which we have to first learn to accept and then question it to understand with faith, Shraddha. Shastra says, इतना लॉजिक तो तुम्हारे समझ में आ गया, तुम नहीं इंद्रियों को चला रहे. I do not know how my ear hears. The sound travels. All this too much of vyapar happening so instantly. यहाँ शब्द बोला नहीं, आपको अर्थ ग्रहण हो गया. Why are our conversations so instant? It fascinates me. I say words, somebody says words, and I instantly understand them, interpret them if our language is the same. You change the language, I won't understand what you say. शब्द तो वो भी बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है. So this common language that is there, which means it is binding us. But ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो पूरी फॉर्मेशन हो रही है, इसमें कहाँ है? Okay, let me rephrase this. मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूं तो फिर मैं तो करता हुई बोलने का. सेंटेंस को ग्रामेटिकली अगर आप देखें, मैं बोल रही हूं, आई एम स्पीकिंग. इन आई एम स्पीकिंग, हु इज द डूअर? I. What is a verb? What is the action? Speaking. I am speaking. No confusion in any one of us. I am speaking is a statement which makes sense. आप बात कर रहे हो. शास्त्र कह रहे हैं, समझा दो कैसे कर रहे हो आप, हमें बता दो कैसे कर रहे हो आप बात. कोई भी पूछे, एक बच्चा पूछे हमसे, हम बोल कैसे पा रहे हैं? और जो हम बोल रहे हैं वो दूसरा इंसान कैसे वही बात समझ रहा है? What is the guarantee कि वही बात वो समझ रहा है कि जो हमने कही? That is the entire realm of poetry. You can go on interpreting what the poet must have meant. I don't think anybody comes close to knowing what the poet meant. But there is literature and literature that gets formed that the poet must have meant this.
तो हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं कि मिल्टन ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, कीट्स ने ये कहा, because they formed words, we heard them, the interpretation is now based on what is within us. हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे अंदर क्या डाटा भरा हुआ है, what are our bundle of thoughts, what is our viewpoint, हम किस नजरिए से देख रहे हैं. The Blind Man and the Elephant, Six Blind Men, everybody knows that poem, Six Blind Men and the Elephant. कब लिखी थी वो पोएम, और आज तक सबको वो पोएम बिल्कुल एक्यूरेट लगती है. जिसने कान पकड़ा एलिफेंट का, उसको लगा सत्य इज लाइक अ फैन. जिसने उसके पैर पकड़े उसने कहा सॉरी एलिफेंट इज लाइक अ फैन. जिसने उसके पैर पड़े एलिफेंट इज लाइक अ पिलर. जिसने टेल पकड़ी इज लाइक अ रोप. एंड ईच वन इज फाइटिंग विद ईच अदर. My vision is right, and all of them are right, and nobody is right. They're all wrong, and they're all right. This is अध्यास, जहां हम एक जगह पे सही हैं, मगर उसी जगह पे हम गलत हैं. Means we need correction. So if we say, I am saying, Shastra says, explain to me, how did you form the words? I'm clueless. Now, our question should be then, if I am speaking mein, I am the karta, the doer, then I should, that kartritva bhav that I have in the action of speaking, I should have the knowledge of how and I'm speaking. The कर्तृत्व भाव जो I am speaking, तो मुझे पता होना चाहिए. बट मुझे पता सिर्फ इतना है कि मैं क्या कह रही हूं. मुझे ये नहीं पता कि मैं कैसे कह रही हूं. How are my vocal cords able to take out exactly the sound that my intention holds? मेरी विवक्षा है कहने की. At this point, say we are talking on आत्मबोध. मेरी विवक्षा है कि जो शास्त्र कह रही है मैं उसको as close as possible अलाइन होके बोल पाऊं. ये मेरी विवक्षा है. मगर वो विवक्षा जो शब्द निकाल रही है, कौन कौन से शब्द निकाल रही है, वो जो शब्द निकाल रही है, in that prayojan that these meanings should come across with a direct perception. How is that happening? None of us know. Shastra does explain to some extent, but yahan aake, as I just said, we have to now be taught by the Shastra. And it says, it is ye jo aham arth hai, aham pad ka jo arth hai, I sense जो है, इन उस I sense के कारण, that is the hetu, that is the reason, that is the support that you, any action of yours, any activity of the senses can function. You know, when we have lights in our apartments, what all do you need for the light to be operative? Definitely at the local point, you need your switchboards. Then you need your fuse board. Then you need the connection with the local supply tower, wherever that is. That has to have its support back wherever the electricity is generated, and it forms a chain. In this chain, when I switch on the fan switch and the fan moves, I'm not connecting all the switches. I'm not connecting the entire circuit behind. मुझे नहीं दिख रहा circuit. मेरे लिए तो बस इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, ऑन किया चल पड़ा तो है, नहीं चला तो नहीं है. अरे, and then
they must be getting most curses in life probably. Their job is a terrible job. If the electricity goes, the entire city is cursing them. Now, we do not complete the circuit. I am not completing the circuit. I am a bhokta of the circuit. Isn't it? If I switch on the light and I get electricity at home, that is all I am doing. But this is bhoktritva. I'm enjoying the benefits. In the presence of that electricity board operating, do I get electricity here? But what do I claim? मेरे पास तो electricity है. I have electricity. We asked in olden days when we didn't have inverters, and remember, we used to call our neighbors and ask, you have electricity? उस घर में है, इस घर में है, इसकी गई, उस ब्लॉक की गई, इस ब्लॉक, we would be so curious to know किसकी गई और किसकी नहीं गई, किसके घर में टीवी अभी भी चल रहा है, किसके घर में नहीं चल रहा है. Who's connecting this? This entire circuit is complete. तभी बत्ती यहाँ तक आ रही है. If the circuit gets dropped any point, the supply gets interrupted. Who's giving this supply to the indriyas? इन इंद्रियों को चलाने में सप्लाई कौन कर रहा है? इनको ऊर्जा कहां से मिलती है? That my eyes can see. And I really hope, I wish we didn't have so much advancement that we had reading glasses now and then hearing aids as we go, and then we need teeth also, and then we need joints also, and then every part of our body gets replaced. Life still continues. In a natural course, most of us by now should have finished our study because हमारी आँख पढ़ ही ना पाती if we didn't have reading glasses. है ना? And very soon हम सुन भी नहीं पाते if we didn't have hearing aid. That means हमारा पूरा श्रवण काल, ये पूरा श्रवण काल एक निर्धारित समय में जब इंद्रियां are at their peak of activity in the prakrit stage of growth. Understood? A child is born, इंद्रियाज are very fresh, but अभी full growth नहीं है क्योंकि अंतकरण में अभी अहम चित्त उसका बैठा नहीं पूरा. तो perceptions जा रही हैं मगर स्टोर पूरी नहीं होती हैं connecting to ourselves. But फटाफट child grows very fast. That is a development of the upadhi. Simple question. ऊर्जा कौन दे रहा है इसको? The food I eat, is the food giving the urja? Who gave the urja to the food? To food. No, it's combination of molecules and chemicals and all that stuff. Who gave the power for hydrogen and oxygen to combine in the perfect measure to give us water? किसने किया? Question mark. नहीं पता. That नहीं पता, मगर इतना पता है कि हो तो रहा है. There is a constant supply of water, there is a constant supply of food, there is a constant supply of oxygen, there is a constant uninterrupted supply of air, sun, moonlight. If we don't have moonlight, a lot of our grains would not have the power to energize. You know, that micronutrients that our body would need comes because of moonlight. If you don't have moonlight, we are all dependent on pills now. But these pills are not, they don't have pran behind. ये inert to inert sustain कर देंगे, but प्राण तो नहीं है ना इनमें. अन्न में क्या है?
अन्न में प्राण है. Am I making sense? I hope you're not feeling, yeah. So anybody lost track of thought? The idea is, we are trying to understand adhyas. Verse says, इंद्रियों का जो व्यापार हो रहा है, वो व्यापार हम आत्मा का समझ लेते हैं. आत्मा कर रही है. It is the Atma that is, because to us the meaning of Atma is Aham. अहम शब्द अर्थ आत्मा नहीं है हमारे चित्त में. हमारे चित्त में अहम का अर्थ पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है. तो शास्त्र कह रहा है ये सुपर इम्पोज्ड है. व्हाट इज द सुपर इम्पोजिशन? आत्मा पे अहम का सुपर इम्पोजिशन है. लाइक इन विंटर्स वी आर सुपर इम्पोजिंग टू ब्लैंकेट्स. We are actually attaching them. Once you superimpose them, you see them as one. You don't see them as two. They operate as one. But ये किसको one दिख रही है? The verse says, अविवेकी नाम, अविवेकियों को. अविवेकी, this Shankara uses it almost throughout in the context of avidya, adhyas. ये अध्यास क्यों है कोई पूछे तो his answer is only simple. अविवेक हितम. It is only because of अविवेक. कब तक रहेगा अविद्या? We are all identified with it, suffering with it, enjoying it, etc. Till when will this avidya last? जब तक अविवेक है. That's the answer. अविवेक क्या है? And our acharyas have written, Guru Shastra Adi Rahita. Guru Shastra Adi Rahita Nam Atma Anatma Vivek Shunya. I'll repeat this. Beautiful definition. अविवेकी कौन है? गुरु शास्त्र आदि रहिता नाम. गुरु शास्त्र आदि पद मतलब the entire parampara of explanation. श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, चित्त शुद्धि, कर्म योग, उपासना योग, जो भी आपको इंक्लूड करना है. गुरु शास्त्र आदि रहिता. जब we don't have the sanskar of Shravanam, तब क्या होता है? आत्मा अनात्मा विवेक शून्य. अज्ञानी नाम means आत्मा अनात्मा की विवेक शून्य. It's not there. आत्मा अनात्मा विवेक ही नहीं है. It's not there. It's शून्य. The word is शून्य. वो है अज्ञानी. अज्ञानी नाम. So अविवेकी नाम is equal to अज्ञानी नाम. Who is an अज्ञानी? Who doesn't have, who is atma anatma vivek shunya. Why is he atma anatma vivek shunya? Because Guru Shastra Adi Rahita नाम. गुरु शास्त्र की परंपरा में आए नहीं, हुआ ही नहीं श्रवण. तो आत्मा अनात्मा का जो विचार है वो इनिशिएट नहीं हुआ. In our tradition we always said, when you take when you go to a guru, when you make a guru, they initiate you. Like initiation ceremony hota tha. That initiation ceremony meant now you have been initiated into this parampara, and that parampara will protect you, and you abide in the dharmas of that parampara and propagate it.
वो होता था इनिशिएशन. ही सेज अविवेकी मतलब जिनको ज्ञान का इनिशिएशन नहीं हुआ. ज्ञान का इनिशिएशन मीन्स सिंपल आत्मा अनात्मा. एंड जस्ट नाउ व्हाट डिड ही से? दिस अहम शब्द अर्थ इज आत्मा. यही ज्ञान है. जिसको ये विवेक नहीं हुआ, which means अहम शब्द का अर्थ आत्मा है और अहम शब्द का लक्ष्य मतलब जिसको आप केंद्र बना रहे हो, वो शरीर जब बनाते हो तो ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है. So what is the भेद? There is a superimposition of this movement of the senses जो हम सारा जीवन बिता रहे हैं. All of us is like every day we are living our life as मैं. In the olden days when I used to enjoy saying this bakri, मैं. The whole day we are bakri. This bakri, what is it? This vyapar of the indriya senses. मन के भी जो थॉट्स हैं वो गुणों से निकले हैं, मगर हम कह रहे हैं आत्मा. इव see what is this verse pointing at? It is only pointing to this कि ये सुपर इम्पोजिशन हो रहा है इसी को अविद्या कहते हैं. ये सुपर इम्पोजिशन है. Verse is not saying anything more than that. It is very simply saying this इंद्रियेषु व्यापृतेषु means जो इंद्रियों का पूरा व्यापार फैला हुआ है हमारा through all the 5 sense organs of perception and action, this is for the aviveki, those who do not have initiation of atma and atma jnanam. For those aviveki, आत्मा व्यापारी इव दृश्यते. उनको लगता है आत्मा ही व्यापार कर रही है. इव दृश्यते. Like what? Like अभ्रेषु धावत्सु धावन इव यथा शशि. यथा शशि धावन इव दृश्यते. जैसे मून भागता हुआ दिख रहा है. कब दिखता है? अभ्रेषु धावत्सु. When the clouds are moving. उस कंडीशन में. तथा in the same way aviveki nam, those who don't have the discernment, don't have the jnana shravanam, for them indriyeshu vyapari atma indriyeshu vyapari eva drishyate. This atma is also looking as if it is doing vyapar. जब इंद्रिया व्यापार कर रही है तो लगता है आत्मा व्यापार कर रही है. That is a superimposition. What is a superimposition? That Atma remains akarta abhokta. The kartritvam and the bhoktritvam is by the aham, not the aham shabda artha. Aham is associated with the height of the body, the weight of the body, the qualities of the antakaranam. ये है अहम की अपनी लिमिटेशन. ये अहम अपना व्यापार कर रहा है, बट इट इज एन सुपर इम्पोज्ड ऑन आत्मा, और लगता है कि आत्मा व्यापार कर रही है. Clear on this verse? We'll move ahead. Yeah. So the next verse says, the topic is continued. आत्मा चैतन्यम आश्रित्य. बेस आश्रय लेके देह इंद्रिय मनोधियः स्वक्रियार्थेषु वर्तन्ते. What is actually happening?
He says, Deha Indriya Mana Dhi. Dhi is Buddhi. Body, mind, senses and intellect. स्वक्रिय अर्थेषु, अपने अपने कार्यों कर रही है, वर्तन्ते, करते हुए रहती है. This is a literal translation. देह, इंद्रिय, मनो, बुद्धि अपने अपने कार्य करती रहती है. किसके आश्रय? Who is that power, as I just said? Who is supporting all this? आत्मा आश्रय. आत्मा चैतन्यम आश्रित्य, उसका आश्रय लेकर. आश्रित्य, for those of you, there is a prefix here, ल्यप. आश्रित्य, उसका आश्रय लेकर कर रही है. आत्मा का आश्रय लेकर ये सब व्यापार हो रहा है. And this is a point of pure Shravanam. Atma is the one which is supporting all this activity. But aviveki को क्या लगता है? Atma is doing the activity. आत्मा ही कर रही है. हम कहते हैं ना, भगवान ही सब चला रहा है. सृष्टि का रचयिता कौन है? भगवान है. सृष्टि कौन चलाता है? भगवान चलाता है. जो भगवान की मर्जी, भगवान ही करता है, भगवान ही सब कुछ है. That is from an attitude point, bhakti point, correct. But Bhagwan himself doesn't do anything. क्योंकि भगवान का स्वरूप तो आत्मा है, ब्रह्मन है. ब्रह्मन अचल है, एवर प्रेजेंट है. जो हमेशा रहता है वो कभी विकारी बन सकता है? Whoever is there, ever present, ever there, can it ever become a changing thing? Will it not contradict? When we say it is ever there, means it is ever present. For it to be ever present, and we say something takes a change. Change का मतलब क्या है? पहले नहीं था, अब है, या अब है, बाद में नहीं होगा. प्रध्वंस अभाव, प्राक भाव. घट and clay. Clay is ever there. But pot पहले नहीं था, बाद में नहीं होगा जब टूट जाएगा. तो जब पॉट पहले नहीं था तो क्या था? क्ले था. सो इज क्ले बिकमिंग द विकारी? Because if clay was vikari, then clay should be non-existent before. बहुत सूक्ष्म बात है. If anybody's had a heavy lunch, you may be sleepy now. What is pot? It came to existence, right? It was not there before it came into existence. And once it breaks, it will not be there afterwards. It has a jayate. Yeah, the potter is making vardate, let's say it. And then it is kept outside. It wears off sheenate, apakshiyate. And then a bird, even when a bird sits on it, it falls apart. It didn't need much. Just a breeze, gir gaya. Vinashyate. Pot had a lifetime. काल में आया, जब आया काल निश्चित हुआ. राइट? स्पेस में आया, एक कॉजेशन लेके आया, अपना कर्म फल लेके आया. वो एक भजन है या समथिंग, नो, दैट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट इट्स अ पोएम. Bhavna would remember. It's a poem where that flower says
कि मेरा ये कि मैं भगवान पे चढ़ा, एंड द अदर फ्लावर्स वो इधर उधर समथिंग, व्हाट वाज दैट? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में देखा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के गहनों में उलझा जाऊं, हाँ करेक्ट, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं. and what is the last one of the last paragraphs is where he says that मुझे तोड़ लेना बनमाली, हाँ उस पथ पर देना तुम फेंक, हाँ मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक. that is from a Kshatriya's point of view, Yes. soldiers point, but there is an I think इसी के अंदर वो आता है कि मुझे अच्छा, this is purely from I must have picked that part of, मैंने कान पकड़ लिया उसका elephant का, कि वो देवों पे मैं चढ़ जाऊं करके, like that flower is saying कि जब मेरे को देव पे चढ़ा जाएगा, देवताओं के साथ अर्चन किया जाएगा, मेरी जीवन की गति पूरी हो गई. एक फूल रास्ते पे गिर जाता है, एक फूल ऐसा चाहता है और एक फूल देवों को अर्पित होता है. Forget flowers, the pets we keep. Fascinating, no? Some pets are so pampered. And look at the street dogs, cows, etc. Causation लेके उत्पत्ति हुई है. My point is that. So when I give the example of the pot, the point is causation लेके उत्पत्ति हुई है और एक काल निर्धारित है. And then विनश्यति. ये सारा साइकिल आत्मा चैतन्य आश्रित्य, ये देह जो जन्म हुआ है, वर्तते, बढ़ता है, इंद्रियां फंक्शन कर रही है, चल रही है, देख पा रहा हूं, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है. इट्स वेरी फैसिनेटिंग व्हेन हमको नहीं दिखते अपने चेंजेस, नो. So beware other. It's getting recorded. Okay. So when you see your own old photograph, if someone has got old passports and when you renew them, you see the change. If you have 2-3 renewed, and I notice now that they have a column there where they have to even point out significantly changed in appearance or insignificantly changed or something like that. And when they mark significantly changed in appearance, मन में प्रश्न आया, अरे वो दीप्ति कौन सी थी? Holding the same passport, वो दीप्ति कौन सी थी? क्योंकि ये तो significantly changed है, तो पासपोर्ट ही ऑफिस वाले कह रहे हैं, ये तो significantly change हो गई. आश्रित्य क्या है ये पूरे चेंज का? Is it communicable? The whole thing has changed. The whole sharir has changed. ये changed, मतलब it's an enlivening process. I don't know what the right word. It's a live process. ये जीवन है. इतना सा cells are meeting, a body is formed, a body is growing, a body is decaying. In between, we have collected some experiences, good and bad, resolved and unresolved. We've collected एक हम होता ना, बेटियां शादी करके जाती हैं तो अपना कुछ लेके जाती थी ना, वो बांध के एक symbolic parents देते थे. I don't know. We were given something, you were supposed to hold it till you enter the next house, home. You know? So like, it was so symbolic at that time. यही तुम्हारे साथ जा रहा है. In this lifetime, you collect something, you exhaust very little, you collect something, ये सारा, this must become a live perception to us. ये सारा व्यापार हो रहा है. It's not a theoretical explanation. It is an explanation of something that is happening. ये हो रहा है. इंद्रिया
व्यापार कर रही हैं। हो रहा, इट्स नॉट थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम इट इज हैपनिंग। सो जब ये हो रहा है, इसका आश्रय इट सेज इस आत्मा चैतन्यम, वही कर रहा है। उसके प्रेजेंस में all this is happening just as surya lokam yatha janaha, just as the minute सूर्य देवता उठते हैं, सब जनाहा को क्या हो, all people what do they start doing? आप कितना भी कोशिश कर लो, your body will move. Even if you are a late riser, even if you want to sleep till 11 and 12 noon, you cannot sleep after that. You will wake up at some point. So what is it actually going on? As the Surya Devata, Surya Lokam, as it comes into perception, Surya अपने आप में कुछ भी नहीं करता है. It remains steady, available, giving the ashray to all the janaha to do their activities. सब व्यापार पे निकल जाते हैं, 9 to 5 jobs, 9 to 9 jobs, 8 to 5, 8 to 6 jobs, Saturday job, weekend jobs, आजकल तो night jobs, 24-hour jobs, this job, that job, job. सारा व्यापार शुरू हो जाता है. That entire realm of activity that is happening in the presence of स्वकार्य. सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, अपने अपने स्वधर्म से. The businessman अपने inclination से business करता है, the cobbler अपने inclination से cobbling करता है. What else do you say? Everybody gets into activity. किसके आश्रय? किसका आश्रय? What is the example saying? दुनिया में जैसे सब लोग अपने कार्य में लग जाते हैं सूर्य देवता के आश्रय, वैसे ही ये सब इंद्रिय अपने कार्य में लग जाते हैं आत्मा के आश्रय. It's a point of reflection. In the presence of this Atma, these Indriyas are operative. Where will be the ahankar then? हमारे जो ये वृत्तियां हमको ओवरपावर कर जाती हैं, I do, I want, I say, my feeling, my thinking, my desire, my this. All this, if this verse falls into our thinking, ये सब किसके? Just a vision shift. नजरिया बदलना है, perception angle बदलना है, देखने का नजर. It's the angle that you're shifting. Where is the angle at the moment? The angle is on the aham, with the body, mind, senses, जो ये function कर रही है, इसमें हमारे aham anchor करता है. Because that aham is antakaranam, mano buddhi chitta ahankar. That aham is antakaranam. वही बांध रहा है इस व्यापार को एक थ्रेड पे. But what is the error that's happening? हम इसको आत्मा समझ रहे हैं, which is my true existence, और वो हम आत्मा पे सुपर इम्पोज कर देते हैं, not recognizing that आत्मा कुछ नहीं करती. In the presence of आत्मा ये सब कुछ हो रहा है. आत्मा सिर्फ इनको अपने प्रेजेंस से सब अपने कार्य में लग जाते हैं. Like if you have they show it in advertisements and all that. And in the olden days when there was more patriarchal society, abhi bhi hai, but wherever there was much more, and if the father was out to work the whole day, the minute he would go out, there used to be an ad, how the children and the mother would start making halla gulla at home and do all kinds of fun. And जैसे ही father आने लगते हैं, और स्कूटर की आवाज आती है, कुछ आता है, सब चुपचाप अपने अपने किताबें खोल के बैठ जाते हैं बच्चे. अपने मदर स्टार्ट्स टू एक्ट एज इफ कुछ काम कर रही है, एंड वेरी सीरियस अपीयरेंस, बिकॉज दैट्स वे
उनके आने से, आहट से सारा एनवायरनमेंट बदल जाता है। उनके आहट से एनवायरनमेंट अपनी गति ले लेता है। एग्जैक्टली द सेम वे आत्मा के होने से ये सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। आंखें देखना शुरू करती हैं, कान सुनना शुरू करता है। तुम्हें कितना भी चाहिए कि यार दिस पोल्यूशन शुड नॉट एंटर माय नोज, इट्स चोकिंग माय लंग्स, इट्स अफेक्टिंग माय वॉइस, तुम्हारी कोई नहीं सुनता। मेरा अहम क्या कह रहा है, भैया मत घुस अंदर, प्लीज कैन आई सेग्रीगेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटल्स। कोई नहीं सुन रहा मेरी। मैंने अपील किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने व्रत किया, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया कि भैया ओ वायु, अपने इंद्रिय को बोला, वायु को तो मैं नहीं बोल सकती, अपने इंद्रिय को बोला भाई थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कर ले, तुझे समझ आनी चाहिए कि क्या घुसना चाहिए, क्या नहीं घुसना चाहिए, व्हाट इज हार्मफुल फॉर यू, व्हाट इज नॉट हार्मफुल, यू शुड हैव दैट नॉलेज। ओ घ्राण इंद्रिया, थोड़े सा विवेक कर ले। माय घ्राण इंद्रिया डज नॉट लिसन टू मी। वो कहती है आउट ऑफ योर jurisdiction, दिस फाइल डजंट कम टू मी, इट्स नॉट माय पोर्टफोलियो, गो टू अनदर डिपार्टमेंट, मेरा काम नहीं है यहाँ। तो जो आएगा मैं तो अंदर ले लूंगा, जैसी हवा आएगी मैं तो ले लूंगी। दैट्स व्हाट द नोज सेज, आई हैव नो फिल्टर हेयर। जितना था वो बस भगवान ने भेजा था थोड़े नॉस्ट्रल्स पे, वो भी डॉक्टर जाके कहता है भाई अब ड्रॉप्स डालो, बिकॉज दिस विल नॉट सस्टेन, दिस फिल्टर इज नॉट एडिक्वेट। Now, this vyapar is happening in the presence of whom? ये इंद्रिय अपने 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 काम कर, वो सुन ही नहीं रही मेरा। मैं कितना बोल रही हूँ उसको, भैया मत घुस अंदर ना, not your, only if that the file comes from the topmost place. Where is the topmost place? आत्मा। आत्मा जब कहेगी तो ही मैं कुछ, आत्मा तो कहेगी शरीर छोड़ दो, वो भी नहीं कहेगी, वो तो कहेगी तुम्हें, तुम्हारे ऊपर है। इफ यू हैव नो डिसर्नमेंट, अविवेकी ना। Have I made the sense point articulate enough? Just in case. So here he says, स्वर्कार्य अर्थ। What is the learning? ये जो मैं बकरी है हम, I'm doing, ये तो सारा व्यापार हो रहा है। The minute I shift my perception, जब मेरी दृष्टि बदलती कि ये इस से हट के, शास्त्र ने कहा है आत्मा आश्रित ये सब अपना काम कर रहे हैं। How a subordinate just follows the orders. If you try and tell the subordinate, भैया तुम क्यों नहीं कर लेते, why don't you also, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, because order has to come from the top. स्व का, it's fascinating, आंख मेरी देख रही है, किसके कारण? आत्मा उसे फंक्शन दे रही है। मुझे क्या लगता है, मैं देख रही हूं। मेरी नाक से सांस जा रही है, किसके कारण? कौन फंक्शनिंग कर रहा है इसकी? आत्मा के कारण। आत्मा आश्रित्य, मुझे क्या लगता है, मैं सांस ले रही हूं। That superimposition, adhyas, where a non-entity like a snake is seen on what is giving the aadhar for that non-entity. Rope. Snake is a non-entity. उसको आश्रय दे रहा है रोप। उस रोप की प्रेजेंस में स्नेक का एग्जिस्टेंस आया है। अगर रोप नहीं है तो वहां स्नेक नहीं है। इन द सेम वे, अगर आत्मा नहीं है तो यहाँ पे स्वकार्येषु इंद्रियेषु नहीं है। So in the presence of, this is to understand only to understand
that the superimposition that we hold needs only discernment to separate. Okay, so just as Surya, so we finished this. So next one is also in the same thing. In this Atma, which is free of any mala, सच्चित आत्मा, देह इंद्रिय गुण और कर्मों का हम अध्यास करते हैं. In the Atma which is free, amala, हम अध्यास करते हैं देह इंद्रिय गुण और कर्मों का. We'll end here. Sorry, I took a little extra time. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः. गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः. पृथिवी सस्यशालिनी. देशोऽयं क्षोभरहितः. ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.